Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. Each of you does complex scenes and complex emotions so well that it appears effortless on screen. I've heard actors say that sometimes it's the seemingly simple stuff that is harder to do. I want to ask each of you, is it harder to laugh on screen or to cry on screen? Not to make others laugh or cry, but to actually be the person that is laughing or crying. Well, I find it easier to laugh, mostly, unless I'm in touch with the side. I'm just a little emotionally blocked when it comes to I find my weakness is in in some of the tearful stuff. A part of me is blocked in that area. I need to work on that. So I find it much easier to laugh. I think for me, anything to do convincingly, anything to do truthfully, actually, to find that truth in your performance. It can be a very simple scene of just your reaction shot. We're just listening to your co-actor. I think everything comes down to how much you're present in that moment. It can be a laughing scene. It can be a crying scene. If I'm not there in that moment, if I'm doing it for a reason that, let me do it this way because, that way maybe audience will laugh, then that's not honest for me. That's like, I'm not doing it for myself. For me, I have to do it for myself first. And if I'm not I'm corrupt there in that moment, then there's no point doing it. So for me, it doesn't matter what the scene is. If I'm not there in that moment, it can be anything. It doesn't work. I think I've heard. Isn't the question, is it easier for you to laugh or cry? Yeah. What is the? I think it doesn't matter. One. No, the question is not, does it matter? Even I've never really thought like that. It's like it's like asking you batting or bowling. I don't know. I like. Well, both. Of course, if you ask Virat Kohli, you'll get an answer. But I'm not Virat Kohli now. I like cricket. I'm saying I like cricket. I like playing cricket. I like bowling sometimes. I like batting sometimes. Okay, so that's a good answer. That's a good answer. He likes both. Depends. Yeah. I feel that it's tougher for me to laugh wholeheartedly, and it's easier to. I just feel it's easier to get caught if you're doing that wrong. I mean, in crying, you can still get away with a lot of aids. Somebody can use glycerine and get into that. But laughing is one of those things that I think it's easier to get caught if you're doing it wrong or if you're bad at it. So I'm definitely more thoughtful if it is me laughing as opposed to crying. So which do you choose? I find it tougher to just laugh wholeheartedly. Okay. Yeah. Same for me. I so agree with Kunal. I mean, it's laughing at times. I see myself on screen. It's like बहुत नकली है. ये तो बहुत नकली तरीके से किया है. ये वो हंसी नहीं है जो मैं हंसता हूँ. लेकिन फिर मुझे कभी-कभी वो बहुत मुश्किल हो जाता है. I mean, हंसना या कोई भी laughing is it's very, very tough, man. I mean, emotion. Yeah, you there is a certain channel you go through it, and you would most of the time you would reach there. At least for me. But laughing, and also it's not just laughing in isolation. You have your co-actor, और वो अगर अच्छा नहीं करेगा, तो it's very difficult to laugh. कि क्या बात कही है. ये बहुत so it's very tough. Laughing is रोना बहुत आसान है. अगर ये भी लगे कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, तभी भी आप रो सकते हो उसी को लेके कि बहुत बुरा सीन जा रहा है. मैं रो सकता हूँ. But yeah, to laugh when it's absolutely not working, it's very difficult. I think वो लाफ्टर के साथ भी होता है. जैसे एक एक्टर ने मुझसे पूछा, मेरे से हंसना नहीं आता, तो मैंने कहा इसी बात पे हंस ले कि तुझसे हंसना नहीं आता. I think मुझे लगता है राज was correct at that point, क्योंकि जो I think ये दो एक ऐसे इमोशन हैं जो बहुत ही क्लीशेड हैं और सबसे आसान एक्टर के लिए I think सबसे आसान होता है. किसी को हंसाना या खुद पे हंसना या रुलाना या खुद पे रोना, ये सबसे आसान है. क्योंकि अगर रोने वाली बात है तो इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों की लाइफ में इतना होता है, वो पता चले जहाँ 5% रोने की जरूरत है वहाँ 100% रो देता है. वो खुद के उसकी जरूरत नहीं थी, जबकि वो कैरेक्टर वो था ही नहीं. तो मुझे लगता है जैसे राज ने बोला, टू बी ऑनेस्ट इन दैट मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक उसके लिए ही स्ट्रगल करता है थ्रू आउट द प्रोसेस में एक्टर. उसके लिए आई थिंक ये एक्टर के लिए सबसे इजी इमोशंस होते हैं, और हम इस दोनों इमोशन के अलावा बाकी जितने भी इमोशंस हैं उस पर कभी डिस्कस ही नहीं करते. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एक न्यूट्रल सा इमोशन, न्यूट्रल से परफॉर्मेंस में हम वो सबसे टफ
टाइम होता है जब आपको न्यूट्रल, कोई उसमें कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, एक बंदा है बहुत ही ड्राई सा बंदा है, उसके ऊपर पूरी पिक्चर है। लेकिन हम लोगों की आदत होती है उसमें कुछ या तो कुछ यार कुछ ड्रामा डालें, मसाला डालो, ड्रामा डालें, ये डालें। I think to be honest in the moment, that's the most important thing. But also, I think, you know, laughter is something I've enjoyed doing in a couple of scenes. In Dil Chahta Hai, many years ago, there was no scene. There was something I had to say to Akshay Khanna about a balloon and a lover who enjoys giving balloons. And I just, at that moment, thought, I have a cousin who has a very funny laugh. And he laughs so much that everybody feels like laughing, whoever talks to him, you know. And sometimes he holds his nose, and he, you know, if you know Kunal, and he tries not to laugh, and his whole face goes purple. So laughter can be very nuanced. It's like if you're in front of your high school principal, and he's bajawing you for something, all of you, and one guy wants to laugh, you know, you'll get expelled. So that feeling of not laughing and trying to, so it can be an extremely nuanced, torturous thing. It's not just ha ha ha. Obviously, as you guys know, like even crying is so complex and comes from different areas. So a laughter, I did a scene in this Booth Police I've just finished where the guy in the front's talking to someone and I'm supposed to laugh in the back. And my laughter is supposed to escalate with each thing he says to a point where I'm having a fit in the background. It's not an easy scene, but it's all about laughing, you know, laughing more till you're stomping, till you're falling down, till you're crying. So laughter it's a thing, you know. Yeah. It's an art in itself, I would say. पंकज जी नहीं बहुत अच्छी बात हो गई। अब इसमें क्या he's going to say this every time. अच्छा the next पंकज जी के लिए यही रख लेते हैं, ये लाइन रख लेते हैं। ये एक्चुअली पंकज जी, आपका पंकज का जो पूरा रोल हो रहा है वो एक हमारे सीनियर थे, पंकज भी जानते हैं उनको, तो उसके सामने हम जाके बोलते थे यार मैंने आज एक पिक्चर देखी, कमाल की पिक्चर थी, तो उनका था यार अरे हाँ यार कमाल की पिक्चर है, बहुत बढ़िया फिल्म है यार। दूसरा थोड़ी देर के बाद आके बोलता था सर हमने एक फिल्म देखी बहुत ही खराब, हाँ यार वो फिल्म बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो मतलब सबको खुश करना है। मेरा इसमें एक पॉइंट है ना कि एक्टर इकलौता प्राणी है जो हंसने और रोने दोनों के पैसे पाता है। हंसने के लिए भी, रोने के लिए भी। देखिए सर, जीवन में हम क्रिएट करते हैं, आर्ट में हम रिक्रिएट करते हैं इमोशन। रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, वो चाहे कुछ भी हो। और हंसी और रोना दो एक्सट्रीम है, वो लाउडर एक्सट्रीम है। ये अस्थाई भाव है। एक भाव होता है संचारी भाव, जो आया और चला गया, कि आप हंसी के बीच में आप शक भी कर लिए, हंसते हंसते शक हो गया आपके आदमी पे, तो हंसी के बीच में शक का आना मुश्किल काम है। उस जो संचारी भाव है, जो आएगा और जाएगा। अब इसके लिए भरत मुंडी का नाट्य शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और पंकज जी, हंसने और रोने के पैसे बिगनिंग में नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली, वो बाद में कमाने पड़ते हैं, बिगनिंग में कोई नहीं देता। बिगनिंग में तो बस। But can I just say something? Yeah. Rajeev, so I have never done one of these before, but I feel I'm in such august and amazing company. All you guys are such lovely actors. It's a big honor for me to be on this platform with all of you, except you, Rajeev, who I think is a pretty bad actor. pretty bad actor. But yeah, wow, it's great. Thank you. Jaideep, Pradeep, do you want to add to that? सर मुझे लगता है दोनों ही मुश्किल और दोनों ही बहुत आसान है। डिपेंड करता है किस दिन आपका सुर सही लग जाता है, किसी दिन आपको बिल्कुल रोना नहीं आता है, आप कुछ कर लो ना हंसना आता है। कि ऐसे फंसते हो आप, एक नॉर्मल स्माइल, एक नॉर्मल यॉर्निंग, एक नॉर्मल पलक झपकाना आपसे नहीं हो पाता। किसी दिन इतना मुश्किल सीन होता है और आपका सुर लग जाता है, इजीली हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस दिन आपका, पर मैं पर्सनली, मेरे लिए एकदम बुक्का फाड़ के जो हंसना होता है ना बहुत दिल से, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नकली दिख सकता है या हो सकता है। वो फील लेवल बहुत मुश्किल है। वो राज वाली बात है कि उसको बिलीवेबल बनाना ना, कि इतना बिलीवेबल आदमी को लगे कि जैसे सैफ सर कह रहे थे, पीछे खड़े हुए आदमी को देखना कि यार वो आदमी ही इज जस्ट हैविंग गुड टाइम बेसिकली, और लोगों का ध्यान जाए, इतना बिलीवेबल बनाना उसको, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज निकल जाता है। एक एक्टर होता है ना सर, वो किरदारों को, जो कैरेक्टर प्ले करता है ना, तो उसके दुख को ले लेता है अपने साथ और अपनी खुशी उसको दे देता है। तो ये बड़ा कठिन काम है। क्या बात है। हाँ, हम अपनी हैप्पीनेस हमेशा कैरेक्टर, बहुत सही बात है, करेक्ट। उसका जो पेन है ना, वो लेके हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। ट्रू। प्रतीक?
So I would agree with Jaideep sir that both are difficult and both are equally enjoyable. But I'll just tell you the example. I mean, one anecdote of my theater time, where one guy had to crack a joke and I had to laugh. और जैसे कुणाल ने बताया कि वो सामने वाले ने क्यों इतना खराब दिया, तो वो नेचुरल हंसी आई नहीं, तो मुझे जिस सुर पे हंसना था मैं उतना हंस नहीं पाया, और उसके आगे का पूरा नाटक हिल गया, क्योंकि मैं अगर उतना हंसता नहीं आगे वाले को उतना क्यों नहीं मिला. And then everybody started blaming me and I said, but joke कितना खराब टाइमिंग के साथ डिलीवर हो गया. How would I laugh? Because audience में भी लोग मारते हैं मुझे कि ऐसा कौन है, ऐसा तो इसने बोला ही नहीं कि तुम इतना हंसे. But so this becomes very difficult when you actually try to react organically.